Cabinet has approved the much-debated One Nation, One Election bill. Now, the contentious proposal, a key promise for BJP's election manifesto, is all set to be introduced in the ongoing winter session of the Parliament next week. Watch this detailed report to understand what exactly is this proposal and the fiery political debate that it has now sparked. In a significant move towards implementing simultaneous Lok Sabha and state elections, the Union Cabinet on Thursday approved the One Nation, One Election bill. Sources revealed that the bill is likely to be introduced in the ongoing winter session of Parliament next week, marking a major step towards fulfilling one of the BJP's key promises from its Lok Sabha poll manifesto. This follows the acceptance of recommendations made by a high-level committee chaired by former President Ram Nath Kovind. The Kovind committee emphasized the need for a legally tenable mechanism to implement simultaneous elections. Key recommendations include developing a legal sound mechanism to synchronize Lok Sabha and state elections. Municipal and panchayat elections, however, would be held 100 days after general elections. It suggests that the President should notify first Lok Sabha sitting after general election. Tenure of assemblies that are formed after Lok Sabha term begins will end with Lok Sabha term. Fresh Lok Sabha polls can be held in the event of hung house or no trust vote. Other key recommendations include conducting fresh Lok Sabha polls only for the remainder of a previous term in case of a hung house or no confidence vote, and ensuring that assembly tenures align with the Lok Sabha term if fresh polls are held mid-term. When mid-term polls are held, Lok Sabha tenure will be only for remaining term of the previous house. The committee also suggested that creating a single electoral roll and voter ID system, and recommended that the Election Commission prepare plans for deploying polling personnel and procuring EVMs and VVPATs in advance. Prime Minister Narendra Modi has reportedly urged his ministers to actively communicate the benefits of simultaneous elections to the public. Home Minister Amit Shah briefed the cabinet on the technical challenges and potential solutions related to the bill. ये तो आज देश के लिए जरूरी है। तमाम विपक्ष की भी राय है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कोई सत्तारूढ़ दल का, ये देश के हित का सवाल है और इसमें दूसरी पार्टियों ने भी सहमति जताई थी। However, the move has faced opposition from several India bloc parties. Tamil Nadu Chief Minister and DMK leader M.K. Stalin was among the first to criticize the bill, describing it as draconian. The Congress party accused the government of introducing a bill of convenience tailored to benefit the ruling party. मोदी जी ने कभी खुद दिखाया नहीं कि उनको वन नेशन वन इलेक्शन में विश्वास है। महाराष्ट्र में 5 फेज में इलेक्शन करते हैं, कभी गुजरात और हिमाचल में इलेक्शन 2 अलग तारीखों पे करते हैं। तो जब इनको मुनासिब होता है एक ही समय पे 2 राज्यों के निर्वाचन कराते हैं, और जब मुनासिब नहीं होता तो अलग अलग समय पे कराते हैं। तो बिना कोई तर्क लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee labelled the bill as an unconstitutional and anti-federal move that could undermine India's democratic structure. ये एक देश एक वोट, ये हमारा जैसा देश में ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इसमें ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, तो इतना सारे स्टेट्स है, अपना अपना हिस्ट्री है, अपना अपना जियोग्राफी है, अपना अपना पॉलिटिकल केमिस्ट्री है, तो इस देश में ये पॉसिबल नहीं है। Shiv Sena UBT argued that implementing simultaneous elections could disrupt the federal balance and give undue power to the central government. देश में विभिन्नता ही हमारी एकता का एक बहुत बड़ा अंग है। उसको खत्म करने का जो काम हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तक किसी ने हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं बताया है
क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि देश के में बहुत सारा पैसा बचेगा, तो वो पैसा बचेगा भाई साहब। कोई ये नहीं पूछा है कितना पैसा बचेगा। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, और आई थिंक सारे ही इसके पक्ष में है। पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन ये सारे जो काम है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में हो रहे हैं। As the political battle heats up, the bill is expected to undergo intense scrutiny in the parliament. Bureau Report, India Today.